Good morning, students. Class 8 Science, and today is our topic. Chapter here Reaching the Age of Adolescence. You have known that growth is the characteristic feature of every living organism. A baby grows into a man or a woman. You have learned about this puberty in boys and girls. Definitions: changes during puberty, human endocrine system. Here, endocrine glands, sex hormones, sex determination, hormones other than sex hormones. Next topic: health care during adolescence. Nutritional needs: say no to drug, alcohol, and tobacco. Physical exercise and hobbies. These things have in this chapter, and we have discussed about these topics in this chapter. You have learned in the previous lesson that reproduction is the characteristic feature of every living organism. Every individual is capable of reproducing its own kind after attaining a certain age and growth. You must have also noticed that every individual undergoes certain physical changes during the period of growth. Let us learn more about the changes that are a part of growing up. तो आपने लास्ट चैप्टर में, इसके पहले वाले चैप्टर में रिप्रोडक्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी किया. एवरी इंडिविजुअल, प्रत्येक इंडिविजुअल कैपेबल होता है अपने जैसा एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ कराने के लिए. एंड दे हैव also notice you have undergoes that the physical changes during the period of growth. ग्रोथ के टाइम बहुत सारी फिजिकल चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे. एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी. फर्स्ट टॉपिक एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी. एडोलसेंस इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेज इन एन इंडिविजुअल्स लाइफ. एडोलसेंस एक इम्पॉर्टेंट स्टेज होता है प्रत्येक इंडिविजुअल लाइफ के लिए. It is the phase when the child attains full physical growth and reproductive maturity. A person between 12 to 19 years of age is called adolescence. It is also called teenagers. Adolescence is associated with the several physical and emotional changes. In adolescence में बहुत सारे physical और emotional changes होते रहते हैं. The process of physical changes by which the individual become capable of reproduction is called puberty. All boys and girls go through these changes. तो जितने भी boys and girls हैं सब में इस तरह के changes मिलते हैं. Puberty ends when an individual reaches reproductive maturity. और puberty जब ख़त्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो फिर individual में reproductive maturity आ जाती है. Growth accelerates in the first half of puberty and stop the completions of puberty. ग्रोथ जो होती है puberty के आधे टाइम तक क्या होती है, बढ़ती है, फिर घट जाती है या स्टॉप हो जाती है, फिर बाद में बढ़ती है. गर्ल्स यूजुअली रीच फुल फिजिकल डेवलपमेंट इन 15 to 17 years of age, while boys is usually complete puberty by 16 to 18 years of age. Okay, thank you, student.